Hello, friends. Welcome to Arohan, a series of shorts on important concepts and questions of accountancy, class 12th. Let's decode company accounts together. Here is a disclaimer. The images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th accountancy and all rights belong to their respective owners. आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनीज अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे यूटिलाइज करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. First, company utilizes its security premium reserve for issuing fully paid bonus shares to the members. कंपनी फुली पेड बोनस शेयर्स अपने मेंबर्स को इशू करती है बाय यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सेकंड, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है उनको राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करती है. थर्ड, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ or the commission paid or discount allowed on any issue of securities or debentures of the company. बेटा आप लोगों ने सीखा होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में कि जो डिस्काउंट पे डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो डिस्काउंट राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से होता है. फोर्थ, for providing for the premium payable on redemption of any redeemable preference shares or any debentures of the company. कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जो प्रीमियम पे करती है डिबेंचर्स पे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन या प्रेफरेंस शेयर्स पर जो प्रीमियम पे करती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो वो प्रीमियम की अमाउंट वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से लेती है. And lastly, company utilizes security premium reserve for purchasing its own shares, that is buyback of shares. Now, here is an easy and interesting mnemonic for learning how to utilize security premium reserve according to section 52 subsection 2. It is BPWPB. That is, brilliant prince work patiently before boards. B, brilliant, for issuing fully paid bonus shares. P, prince, for writing of preliminary expenses. W, work, writing of expenses, commission or discount allowed on any issue of securities or debentures. P, patiently, for providing premium payable on the redemption of preference shares or debentures. And B, before boards, in buying its own shares, that is buyback of shares. So children, strong concepts build strong confidence. Believe in your preparations. Thank you for your learning with us. Hope you have understood the concept. Thank you very much and all the best for your board exams.